guys, this is Shri. Welcome back to my channel. So today in this video we are going to talk about how to look chic and put together when you're not in a mood to get ready, to do your makeup and still look stylish at the same time. So yes, let's quickly jump into the video. Guys, starting from your hair, if your hair is dirty and you're not ready to make any hairstyle, मतलब hairstyle बन ही नहीं पा रहा है कोई भी अच्छा सा. So what you can do is you can just cover your hair with any bucket hat, baseball cap, or we have different style of cap hats in the market. So you can use any of those and just make your style. और इससे क्या होता है ना कि किसी को ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे हेयर डर्टी है, तुम कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बना पा रहे हो एंड you're still looking good in that outfit. And guys, there are some situations when you're not in a mood to do full face off makeup. So उन days में तुम क्या कर सकते हो एकदम stylish और put together दिखने के लिए? You just need two items from your vanity, your brow pencil or your any favorite color of lipstick. You can use either these or two products to look great. एंड सच में ट्रस्ट में गाइज ये दो चीज़ें तुम्हें काफ़ी हैं तुम्हें अच्छा दिखाने के लिए. यू कैन जस्ट डू योर ब्राउज एंड वेयर योर फेवरेट कलर ऑफ लिपस्टिक and you're good to go. You just go out and look stylish, put together. And guys, now our hair and makeup both are sorted. Now comes the most crucial part of looking put together, more stylish ever. You can wear any basic outfit and still you can elevate it through accessorizing. Yes guys, you heard it right. And guys, you can accessorize the outfit like me. Also we have 3 steps जैसे भी आप अपने outfit को accessorize कर सकते हो. First you can go for hoops if you're not going for necklace. Then first you can go for hoops guys, or you can go for chunky ones, the dainty ones. It's depends on your choice. And if you're not wearing hoops, then what you can do is you can just go for dainty necklaces जो होता है ना 3 layered ones. तुम या तो layered ones choose कर सकते हो या फिर single वाला भी पहन सकते हो. एंड थर्ड वी हैव इज रिंग्स. रिंग्स तुम नॉर्मल अगर तुम सिर्फ हूप्स एंड रिंग्स पहन सकते हो या फिर नेकलेस और रिंग्स, तुम रिंग्स तो किसी के भी साथ पहन सकते हो या फिर ब्रेसलेट्स एंड ऑल. यू कैन जस्ट एक्सेसराइज द आउटफिट एंड एलिवेट इट. Also guys, through this video today I'm going to talk about my very own venture. Yes, we have a jewelry store on Instagram. We have modern and minimal jewelry. You can expect gold ones, chunky ones. We have every kind of jewelry on our page. Also guys, you can get necklaces, rings, earrings, minimal, modern and anti-tarnish bracelets, hypoallergenic, water resistant, ऐसी ज्वेलरी जो जल्दी ख़राब नहीं होती है बेसिकली. सो डू चेक आउट आवर इंस्टाग्राम गाइज. आई एम गोना मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. येस, ऑल्सो गाइज वी आर रनिंग a 10% discount because of Pride month. So yes, do check out our collection guys. Now the fourth thing you can do to look your best is to wear any blouse, any top which has embroidery or which has lace. Or if you have a casual style, then you can wear any pop color of shirt. And also if you're not shirt, then what you can do is if you're just wearing any basic tee, then you can layer it up with any denim jacket or any quirky jacket, and that will just uplift your look. A good pair of denim is a must have in order to look chic. Because तुमने कोई भी ऐसे बेसिक सा टॉप पहन लिया है, but if you have a good pair of denim, if you're just wearing the best fitted denim guys, then it will automatically make your look elevated or chic. बस तुम छा जाओगे. तो अगर तुम्हारे पास अच्छी वाली denim है ना guys, or if you do not have a denim, just invest in your denims guys. Best guys, by looking good, it is very important to feel good from inside as well. And in order to feel good, what you can do is you can invest in good fragrance perfume. We have so many brands who are offering perfumes at cheaper price. You can check Miniso. The one which I'm using is from Zara. So yes, you can definitely check the brands. I'll mention the description guys. Definitely invest in good perfume guys. The 7th thing which I always make sure that it's done is my nails. Yes, I always make sure that they are painted well और कोई भी ऐसी बुरी condition में नहीं है. So yes guys, also you can always go for lighter shades, your pastel colors, or because अगर हम कभी भी nude colors
यू नो द लॉजिक बिहाइंड यूजिंग न्यूड कलर्स इज, अगर वो चैप भी करेगा ना तब भी तुम्हें ऐसे विजिबल नहीं होगा किसी को, बट वहीं अगर तुम डार्कर शेड्स को अगर नेल पेंट लगाओगे तो वहाँ पर एकदम से वो विजिबल हो जाएगा. So yes, that is the reason it says that always go for lighter shades, always go for nude or pastel colors nail paint. And guys, the eighth and the most crucial thing is to have clean teeth, because yes, जितना ज़्यादा छोटा और बेसिक सा दिखता है ना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है guys to have clean teeth. और क्योंकि जैसे तुम ऐसे क्लीन टीथ होंगे तुम बहुत स्माइल कर पाओगे, एकदम अच्छे से एकदम ऐसे फ्लॉन्ट कर पाओगे और तुम इतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी शो होगे. सो येस, ऑटोमेटिकली सब अपलिफ्ट होगा, एकदम तुम्हारा मूड अपलिफ्ट होगा. एंड आई एम गोना मेंशन लिंक फॉर अ चारकोल पाउडर दैट आई हैव बीन यूजिंग to make my teeth look more white, and you can use that too. And guys, the last second thing we have is a structured bag. Yes, it is very important to have a classic black structured bag which will go with every other outfit. और अगर हम कंपैरिजन करें एक स्लाउची बैग जो कि एक बड़ा सा शेप का है और बहुत ऐसे स्लाउची सा, उसका कोई एकदम पर्टिकुलर शेप नहीं है, एंड अ बैग विच हैज़ अ शेप विच हैज़ अ स्ट्रक्चर. सो जो भी तुम्हारे आउटफिट के साथ जो बेस्ट लगेगा दैट वुड बी योर स्ट्रक्चर्ड बैग गाइज. सो येस, ऑलवेज you should always have a structured bag in your wardrobe. Always invest in a structured bag, always invest in a classic black structured bags, and that will automatically uplift your outfit. Yes. And guys, the last and my most favorite thing is to wear heels. Yes, on those days when I want to look chic, put together, look the most stylish, I just go for heels. मैं मतलब अपने sneaker shoes का जो छोड़कर आ जाती हूँ कि नहीं आज तो मैं नहीं पहनूंगी, मैं आज मैं बस अपने heels को पहनने वाली हूँ. So yes, I do that, and it could be your kitten heels, your pencil heels, or whatever you are comfortable in. So yes, always go for heels guys whenever you want to look the most stylish and put together. Now comes the part where I'm gonna tell you how I imagine my look chic outfit. I imagine my hair tied in a ponytail, white shirt, accessories, it could be your jewelries, your hoops, or necklace. I go for so many accessories I'm not wearing right now. मतलब मैं कुछ भी वॉच के साथ अपने स्टैक्स ऐसे कर लेती हूँ. चेक आउट अतीजा फॉर दैट. आई गो फॉर जीन्स एंड माई किटन हील्स. येस, एंड आई ऑलवेज कैरी माई स्ट्रक्चर्ड बैग. दैट इज़ माई लुक chic outfit guys. टेक इंस्पिरेशन. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप कौन कौन से वीडियोस मेरे चैनल पर और देखना चाहोगे. And also like, share, subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon so you'll be notified every time I'll upload a new video. And I'll see you in the next video. Bye, take care.